So today we will be discussing the characteristics of sound, meaning कि हम कोई sound किसी दूसरी sound से अलग कैसे है ये कैसे बताते हैं. Like what are the differences that create or we say that some sound is different. Okay. For example हम voices को अलग अलग क्यों पहचान पाते हैं? अगर same बात मैं बोलूँ और same बात आप बोलो, why can you see a difference in it even though we are saying the exact same thing in the exact same tone? So हम पढ़ेंगे वो differences किस किस reason से create हो सकते हैं. So yeah, just a second. So let's start characteristics of sound. So there are three characteristic properties of sound, which are intensity, also known as loudness, the pitch or frequency, and lastly, quality of timbre. You'll understand, Yunus. Don't worry. ये तीन पॉइंट्स हैं, तीनों पॉइंट्स को समझते. अच्छा, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. सो सबसे पहली चीज हम इंटेंसिटी की बात करेंगे. लेट्स स्टडी इंटेंसिटी. What is loudness, by the way? Loudness is our capacity to differentiate between soft and like a fade or a soft and like. I know I cannot define loudness. Everyone knows what loudness is. Like I don't need to define loudness. I don't think you will be asked the definition of loudness. That's the thing. So I don't think they will be asked the definition of loudness, and you can definitely incorporate it in amplitude once you understand. हाँ मैं बताता हूँ तुम्हें. सो इंटेंसिटी का मतलब होता है, इंटेंसिटी यूज करते हैं हम लाउडनेस मेजर करने के लिए. लो इंटेंसिटी मींस वो बहुत ही फेंट सी साउंड है, एंड अगर हाई इंटेंसिटी मींस बहुत लाउड साउंड है. ठीक है. सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इन द वेव्स जो हमने बनाए. तो अगर हम साउंड वेव्स बनाए, एंड रिमेंबर साउंड वेव्स के ये हमारी एक्सिस है, टाइम एक्सिस, एंड देन ये हमारी एक्सिस पे हम डेंसिटी देख रहे हैं. ठीक है, डेंसिटी और प्रेशर, और ये जो बीच में लाइन होती है एवरेज डेंसिटी होती है. ये बार बार मैं इसलिए याद दिलाता हूँ क्योंकि कभी कभी में ना बच्चे सोचते हैं कि जस्ट बिकॉज साउंड को हम ऐसे बना रहे हैं मतलब वो कौन सी वेव हो गई, ट्रांसवर्स वेव हो गई. बट ट्रांसवर्स वेव में क्या हो रहा था, मोशन जो था, द थिंग इज वी वर सेइंग कि ये है डायरेक्शन ऑफ. ठीक है, या बेसिकली डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन. बेसिकली टाइम अगर इसको लेते हैं हम तो उसकी मोशन क्या है, मोशन इज अगेन this compression and decompression. So direction of propagation is same as the direction of movement or direction of motion. So that's why sound wave is known as a longitudinal wave. बट इसमें हम डेंसिटी की बात कर रहे हैं. तो जो ये पीरियड्स है ना बीच में, यहाँ पे कंप्रेशन एंड डिकम्प्रेशन हो रही है जिससे डेंसिटी चेंज हो रही है. इसको हम रिप्रेजेंट ऐसे कर रहे हैं. दिस डज नॉट मेक इट अ ट्रांसवर्स वेव. ओके, सो लेट्स जस्ट मेक अ साउंड वेव. Let's just make the sound wave red. Okay, so somewhat like this, and another sound wave somewhat like this. So even though they have the same, if you think about it, मैंने थोड़ा rough idea बनाया, लेकिन they have approximately the same wavelength. Yes. है ना? Yes. They have the same wavelength. The only difference is in y-axis, which is the difference in कि वो कितना ज़्यादा ऊपर और नीचे जा रहा है. This is the known as difference in amplitude. जितना ज़्यादा amplitude होगा उतनी ज़्यादा loud होगी. जितना ज़्यादा amplitude उतनी ज़्यादा loudness. So let's study about
amplitude. So do we have a definition? Yeah. So the loudness or softness of a sound is determined basically by the amplitude of sound. Amplitude पढ़ा चुका हूं ना आपको? Yes, yes, sir. So it varies inversely as the square of so we are writing this about पहले ही लिख ली varies inversely से पहले. अच्छा पहले let's understand this and then we'll see. So we are saying कि जितनी ज्यादा amplitude है उतना ज्यादा sound loud होता है. So अगर यहाँ पे yellow और red wave है तो yellow obviously is louder because it has more amplitude or it has high intensity. So this red one is softer. Just by looking at the waves, you can see that. Okay. Now, very important is, अच्छा तुम सबने गाना सुना है कि amplifier? Amplifier होता क्या है? आवाज बढ़ाने के लिए. So basically वो wave को इस तरीके से change कर रहा है जिससे क्या हो? Loudness बढ़े उसकी. So this is the meaning of amplifier. जहाँ भी आप amplifier देखते हो, this is what it is doing. हाँ तो guitars में भी जो होता है, you attach an amplifier to it. This is what it does. Basically, हाँ तो that is what it does. Basically वो sound wave को लेता है, मतलब वो कम इंटेंसिटी की साउंड वेव्स को सुनता है एंड देन बस बेसिकली उसकी इंटेंसिटी बढ़ा देता है और कुछ नहीं करता. दैट इज व्हाट इट डज. आउटपुट में डाल देता है उसे. ठीक है. एंड देन समथिंग यू वी यूज इट. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट इज सम पीपल थिंक दैट increasing the amplitude is only factor. ठीक है. Doesn't work that way. Let's say हमारे फोन में छोटा सा स्पीकर है. ठीक है. तुम इसकी कितनी भी एम्पलीट्यूड बढ़ा दो, देयर इज अ मैक्सिमम जो प्रोड्यूस कर सकता है, उसके बाद आवाज फटने लगेगी. तो इसलिए इफ यू हैव नोटिस सम स्पीकर्स, सम चीप स्पीकर्स एट हायर वॉल्यूम्स, उसकी आवाज फटने लगती है, क्लियर नहीं आती. क्यों होता है ऐसा? बिकॉज दे आर नॉट मेड फॉर दैट हाई, मतलब उतनी ज्यादा हाई एम्पलीट्यूड्स के लिए वो बने नहीं है. एंड दे आर बेसिकली, सोचो ना, अगर मान लो तुम्हारा जो प्रोड्यूस कर सकता है वो यही है, इतने रेंज तक वो एम्पलीट्यूड प्रोड्यूस कर सकता है, तो जब तक वेव ऐसी रहेगी तब तक वो आराम से प्रोड्यूस कर पाएगा. मान लो अब एक वेव ऐसी आती है, so think about it, वो क्या प्रोड्यूस कर पाएगा? this and then flat and then this and then flat and this is noise. ये जो फ्लैट हो रहा है जहाँ पे, बिकॉज वो तो प्रोड्यूस ही नहीं कर सकता ना उतनी हाई. हाँ, सो इसीलिए, तो दैट इज द रीजन. नाउ वी नो. एनीवेज, नाउ the loudness also depends on some other factors other than amplitude. So the loudness of a sound, let's see the following points, varies inversely as a square of amplitudes. the distance from the source. Meaning, if you have a loudspeaker, let's say you have a big speaker here, ऐसे दिखता है ना कुछ speaker. So if you have a loudspeaker, let's say it's producing a big sound wave, something like this. Eventually, when as the distance increases, the sound's amplitude will decrease. So this is what happens to sound. ठीक है. जितनी ज्यादा, बिकॉज एनर्जी है वो, जितनी ज्यादा प्रोपगेट करेगी, एनवायरनमेंट को लूज करेगी, एंड देन इवेंचुअली वो धीरे धीरे स्लो होती जाएगी. डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती पर ट्रांसफर हो सकती है. तो इट्स बेसिकली ट्रांसफरिंग टू अदर पार्टिकल्स. सो बेसिकली ये जो डिस्टेंस आप देख रहे हो, ये क्या है? डिस्टेंस है. सो जितना ज्यादा डिस्टेंस हो रहा है उतना ज्यादा साउंड की क्या हो रही है? लाउडनेस कम होती जा रही है. सो इट्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स. ओके. नेक्स्ट,
depends upon the surface area of the vibrating body. So let's see, अगर आप लोगों में से किसी ने have you heard about those speakers or seen videos or maybe you have one of those speakers जिन्हें हम एक किसी भी ग्लास पे या हॉलो चीज पे रखते हैं और वो बहुत ज्यादा साउंड प्रोड्यूस करने लगते हैं. Have you seen that? Yeah. So maybe some of you have seen that somewhere on Instagram maybe. But there is this one type of speaker जो कि वैसे बहुत म्यूजिक जो होता है उसका मतलब बहुत पिच हाई होती है उसकी. But when you keep it at a hollow surface, let's say a tub or a glass or something, then it produces bass also along with that sound because उसका membrane बड़ा होता है. तुमने भी वो videos देखी हो stuff. What happens is basically कि even though it's using the same energy, but now that it has a larger surface area, it has a larger surface area to vibrate. So it can produce bigger waves in general. So that's why more the surface area, more the sound, louder the sound it can produce. You can just think of it as a small speaker membrane and a big speaker membrane. So अगर आपके घर में जो होम थिएटर स्पीकर्स है वर्सेस जो आपके ईयरपॉड्स या ईयरफोन में जो स्पीकर होते हैं उनमें ऑब्वियसली क्या डिफरेंस है. ये बहुत बड़ा मेम्ब्रेन है जो कि प्रोड्यूस कर रहा था. ड्राइवर्स जिन्हें हम बोलते हैं 5 मिलीमीटर ड्राइवर्स पढ़ा सुना होगा तुमने. या दैट इज व्हाट इट इज. Depends upon the surface area of vibrating body. Next, varies directly as the square of the frequency of the source. अच्छा, अगर कोई चीखता है, तुम सबने लाइफ में कभी ना कभी चिल्लाया होगा. किसी ने अपनी मॉम की चप्पल देख के, किसी ने कॉकरोच देख के, किसी ने खुद को शीशे में देख के, कभी ना कभी तुमने चिल्लाया होगा. ठीक है, एनी पॉइंट ऑफ योर लाइफ यू मस्ट हैव शाउटेड. सो जब आप चिल्लाते हो, सो योर पिच इज लोअर और हायर. Always higher. When you shout, your pitch is always higher. That is a natural instinct. Higher क्यों? Because if you think about it, हम जितनी भी चीजें दूर दूर तक सुनने देना चाहते हैं, उनमें high pitch कहीं ना कहीं involved होती है. Let's talk about whistles. Like why do we whistle? Because that high pitch sound will travel much faster. अगर मैं चिल्लाऊं उससे ज्यादा वो high pitch sound travel करेगी. ठीक है? So that's the thing. We even though do not understand know this, but implicitly we understand कि higher the pitch, more would be the loudness even with the same energy. So अगर आप same energy से मैं कुछ बोल रहा हूँ, अगर मैं same energy से सीटी बजाऊंगा, so it will travel much more distances. So it varies directly with the square of frequency of the source. So more the frequency, more would be the loudness. Remember that. Frequency वो है ना हाँ वेव हाँ ऑसिलेशंस मतलब लाइक 1 सेकेंड है अगर तो 1 सेकेंड में कितनी ऑसिलेशंस कंप्लीट हुई. अच्छा वो एक फ्रीक्वेंसी. हाँ नहीं इसकी फ्रीक्वेंसी जैसे 1 2 3 4 4. हाँ नहीं वो या तो कंप्लीट कितनी बार हुई. दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग. सो या दैट इज अबाउट इट. लाउडनेस पे तो कोई क्वेश्चन आएंगे नहीं मतलब न्यूमेरिकल जैसे कि लाउडनेस एक फिजिकल क्वांटिटी नहीं है. You can measure intensity. If you can measure intensity, तो तुम मुझसे बता सकते हो loudness आ रहा है तो हाँ like I don't think that many intensity देख सकते हैं. Intensity is really about loudness. So if you can measure intensity, that is what you call loudness. ठीक है, अगर दो चीजों की intensity compare कर सकते हो तो you say the one with the more intensity would be loud. Okay, so let's see the formula for intensity. maybe not. पढ़ने के लिए पढ़ते हैं, क्वेश्चंस की बारे में बात करेंगे. So let's see what is this defined as. So intensity of a sound at any point in space. Intensity of sound at any point
in space is defined as the amount of energy passing per unit time per unit area in a direction perpendicular to the area. This will give us the formula that intensity equal to energy. So amount of energy passing per unit time, तो divide by क्या आ जाएगा? Time per unit area, तो divide by area in a direction perpendicular to area. ठीक है? And then we know that power का formula याद है आपको? Energy into time. Energy is equals to क्या आ गया फिर? Power upon area. Power, sorry. So energy पावर डिफाइन कैसे करते थे हम? मैंने गलत लिख दिया, सॉरी. Rate of doing work. So we have power is equals to work done upon time, which can also be written as energy upon time. So P into T is equals to E. Okay, तो यहाँ पे एनर्जी की जगह क्या लिख सकते हैं? पावर into time divided by time into area. So यहाँ पे टाइम कट जाएगा and we'll get power upon area. ये दो फॉर्मूले इसके. पावर हम किस में मेजर करते हैं? वॉट में. मैंने एरिया किस में मेजर करते हैं हम? मीटर स्क्वायर में. सो दिस इज, इसकी इंटेंसिटी की यूनिट क्या होगी? वॉट पर मीटर स्क्वायर. जूल सेकंड मीटर भी हो सकता है. हाँ, थिंग इज जूल पर सेकंड एंड एरिया. तो ये एनर्जी किस में मेजर करते हैं हम? जूल्स में, डिवाइडेड बाय टाइम को सेकेंड्स में एंड एरिया को मीटर्स में. सो जूल्स पर सेकंड मीटर स्क्वायर. या मतलब which is exactly what this is more comprehensive. This is one more unit answer should not use. ठीक है. Now let's understand one more thing. Even though when we think of intensity and loudness are directly related, okay, because more the intensity, more would be the loudness. It's very simple to see and understand that. But intensity is more like a scientific term, which is more about energy, and loudness is more of a sensation term, which says आपको जो feel होता है. ठीक है. So loudness can vary, intensity cannot vary. So अगर मैं दो लोगों को सेम जगह पे खड़ा करता हूँ एंड अगर मैं उनके सामने एक स्पीकर प्ले करता हूँ, तो दोनों को जो इंटेंसिटी रिसीव होगी वो सेम होगी, बट देयर आर चांसेस की लाउडनेस डिफरेंट हो. या एज पे डिपेंड करेगा. लेट्स से वन ऑफ देम इज डेफ, सो दे वुड हैव नो लाइक, उन्हें कुछ फील ही नहीं होगा. देयर इज नथिंग लाउड फॉर देम, बट द अदर वन वुड बी लाइक ये तो बहुत लाउड साउंड है. So even though both of them are getting the same intensity, not the same loudness. Intensity can be measured. Loudness is more like a relative term.
हाँ मतलब वो सेंसेशन है ना, so how can you define a sensation? So yeah. Seriously, आप loudness को define नहीं कर रहे. Yeah, I did say you sensation है more likely. Yeah. Anyways, let's just write the difference between them. Difference दे रखे हैं उन्होंने, कभी कभी अगर आ जाए तो intensity and loudness में, loudness and intensity. So loudness is it is not a physical quantity, not a physical quantity. Not entirely, mention kara hai, that is true. Because some might say ki more the decibels, more the loudness, but they are technically measuring intensity. Intensity, it is a quantity. But not this. Yeah, it is a physical quantity. It is a physical quantity that can be measured accurately. Next, it depends on intensity of sound, obviously, and sensitivity of ear. Well, it does not depend on sensitivity of ear. This means that if there is a sound wave, and sound waves are quite powerful, if there is a powerful sound wave that can push you back, मतलब they can. Glass को भी shatter कर सकती है, वो समझ आता है, but हमें push करती है. Yeah, if enough energy is there, they can definitely push through. Like shock wave. Yeah, it is also sound wave. So glass. So then that would work the same on everyone, no matter how loud or faint this feel it. अगर आपको push कर सकती है sound wave तो दूसरे को भी कर सकती है, because it is energy that's pushing you. Sir, weight पे depend नहीं करता. हाँ sir, weight में पूछने वाली. Thing is, we are comparing two ideal case scenarios कि दोनों में given की दोनों का same weight हो, अगर एक को push कर पाएगी दूसरे को push कर पाएगी. Not sensitivity of air is not the matter. Sensitivity of air does not matter that again. जैसे इंटेंसिटी सेंसेशन है, इसी तरीके से पिच इज ऑल्सो सेंसेशन. फ्रीक्वेंसी इज द कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू इट. जैसे यहाँ पे हम इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं, एम्पलीट्यूड की बात कर रहे हैं, सिमिलरली इसमें फ्रीक्वेंसी इज द टर्म रिलेटेड टू इट, but pitch is a more like a sensation. Okay. तो जितनी ज़्यादा frequency होगी उतनी ज़्यादा pitch भी होगी. चलो, lastly let's talk about the quality of timber. तो pitch का नहीं, pitch का नहीं. पिच का क्या लिखोगे? पिच की डेफिनेशन लिख लो भले. So pitch is that characteristic, मतलब पिच के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं बहुत. तो साउंड which helps differentiating
between a shrill sound from a wave or slash dull sound. Basically, more the frequency, more the pitch. Okay, that is what we call treble if high frequency hai, and then low frequencies agar hai, bass. Okay. You want to make diagram, then obviously ये तो हम बहुत बार कर चुके हैं, but this has low pitch, which has a, and red has higher pitch. Okay. ओके, क्वालिटी ऑफ टिम्बर मतलब समझते हैं. सो मैं आपको पहले समझा देता हूँ. बेसिकली जितने भी हमारे डिफरेंट डिफरेंट साउंड होते हैं, डिफरेंट चीजें जो साउंड प्रोड्यूस करती है, अगर वो सेम नोट में भी हो, अगर वो हार्मनी भी क्रिएट कर रहे हो, तब भी उनकी डिफरेंट डिफरेंट साउंड हो सकती है. दैट इज बिकॉज दे माइट हैव अ डिफरेंट वेव फॉर्म. सो मीनिंग कि लेट्स से, लेट मी मेक दैट. तो अभी तक हम जितने वेव्स बना रहे थे ना, वो बड़े सिंपल सिंपल बना रहे थे. लेट्स से हम सबसे सिंपलेस्ट वेव बनाए पहले, समथिंग लाइक दिस. ठीक है, तो इट हैज अ फिक्स्ड, what it has a fixed shape, or we can say wavelength and frequency, everything is fixed. Now let me make a superimpose और इसके ऊपर redraw करूं एक दूसरा wave. So let me make something like this. Exactly. So अगर ये कांप रहा है, not really, not really, but what you understand from this is इसका बताओ wavelength same है ना? इसका amplitude same है, but would it sound same? No, because it has a different shape or it has a different, we call this waveform. जैसे मैं तुम्हें इनिशियली पढ़ाया था, this is a different waveform. और चीज का waveform होता है, it has a different waveform. So even though two things can have the same amplitude and even the same frequency, they can sound different because they have different waveform. This is what is the quality of timbre. So the characteristic of a sound which distinguishes it from another of the same pitch and loudness is called quality of quality or timbre. वैसे मैंने quality of timbre सुना है, if they say then quality और है. Okay. सर जैसे आपने बताया कि शेप भी मैटर करती है वेव की, तो कोई अभी तो वेव में कोई वेव ऐसे भी हो सकती है.
as long as it is moving forward. So you can make a wave like this, okay? But you can never make a wave like this. Because this means कि ये इस time में यहाँ पे था and then future में पीछे चला गया, which is so Sense नहीं होता। as long as it is in this, कुछ भी हो सकता है उसको। yeah, कुछ भी हो सकता है, depending upon what is producing. शराब की वजह से कैसे आवाज आती है? So you can find out about different types of waveforms of different objects producing sound. It's very interesting. Like you can actively even if you have a good microphone, you can connect it to your laptop and then download some softwares. Also, they will show you exactly waveform of that sound, so exact waveform. तुमने कभी वो देखा equalizers देखे जो not equalizers, तुमने ऐसे bars देखे होंगे. There is this app, I don't remember the name, जिसमें phone में जो भी गाना background में बन रहा होता है उसका waveform बना रहा होता है. Yes, It is like not 100% accurate but quite accurate. like rough guess. Yeah, you could say that. So, एक सेकंड, चलो ये लिखो, मैं आता हूँ एक मिनट. So let's just imagine an orchestra. And orchestra में काफी बार क्या होता है ना, you see a lot of different instruments, clarinets, and then piano with the trumpets, violins, cello, and a lot of instruments. Now, a lot of times some instruments are playing the exact same notes. Okay, they sound different, and some notes are like, अगर मान लो तुम्हारा कोई bassier note है, ठीक है, octave समझते हो तुम? Yes. Like अगर you every eighth note octave, मतलब they sound similar. So मान लो आप एक ऊपर बजा रहे हो, ठीक है, तो the thing is जो higher notes है, अभी हमने देखा कि मतलब अगर हम same energy से ही बजा रहे हो, same amplitude पे ही बजा रहे हो, तो same intensity से भी, so जो lower pitches है they will sound less and then higher pitches will sound more loud, ठीक है. तो उसके लिए it might be कि just to make them be on the same level, कि हमें same सुनाई दे वो, so जो हमारा सेम वेव है, ये मान लो ये वेव है, सेम फ्रीक्वेंसी पे हम एक और वेव बजा रहे हैं बट मोर एम्पलीट्यूड, सो द अदर वन इज साउंडिंग ओवर, तो उसे सप्रेस कर रहा है. दैट इज द रीजन फॉर इट. सो यू वुड नेवर सी कि जो एक बेसियर नोट है, ठीक है, उसके ऊपर एक बहुत ही एग्जैक्टली सेम बहुत ही शैलो नोट सेम इंस्ट्रूमेंट नहीं बजाएंगे. दैट इज द रीजन कि डिफरेंट डिफरेंट नोट साथ में बज रहे हो. You'll find that interesting. The thing is, this is something you will rather study more and in better form in music theory than in science. So maybe you should pursue music theory if you find that interesting. But believe me, so I have studied a little bit of music theory. I can tell you it's very interesting. And it is very much like studying. So if you like studying, but not your course, and you want to pursue something else, so do look into music theory. There's a lot of literature involved. There's a lot of understanding of notes, understanding of triads, who created what, how was it created, how can you create that. And the best part about music is sometimes you would be just experimenting. Let's say you started to learn a piano and then you're just experimenting and you produce something very good. Oh, this sounds very nice. And then you'll see that somewhere very old someone produced that note and that is a very famous piece maybe. So it's like saying कि तू मतलब, let me compare that to actually science. एंड इट्स लाइक कि तुम मान लो अगर एटम इतने बड़े होते कि तुम उनसे खेल सकते होते कंचों की तरह, ठीक है. सो लेट्स से यू रैंडमली वन डे प्लेइंग विद योर एटम साइज कंचेस, you broke it and you see कि वो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, and then तुमने देखा कि oh, the scientist also discovered this. So that is how music works. So it's very fun that you can discover things that very renowned people have learned in music, because it is about more about creativity. Everything is about that. Okay. For everyone who's thinking music was easy, not really. And for everyone thinking कि तू क्या हर musician को music theory आती है? No. So it's not important. So like you can just produce a lot of people who play instruments are not even trained in it, do not understand sheet music. Sheet music देखते हो? तुम्हें पता है sheet music? You would see some lines and then उसमें तुम देख रहे होगे and then SJ symbol देखते हो. I'm not explaining क्या क्या होते हो, but सबका मतलब होता है. So not everyone understand this. Some of the musicians might even not understand. So a little bit of it. Just I like to study random things. Just you just have to be curious enough to अगर मान लो आप सबके पास इंटरनेट है, तुम घर जाओगे देखोगे तुम मजा आएगा पढ़ने लगोगे. Thing is, when I was your age, I was not wasting time on Instagram. So yeah, that is the reason I might know a little bit more things. Okay. So, but that is the reason I tell you कि सीखा करो तो कुछ अच्छा सीखा करो. Because
Instagram is totally, if you think your Instagram is 100% waste of time, that is what you're searching for. Like, because mine has some other stuff also. For example, some of the art, some of the scientific pages giving you facts and stuff, and some of the news channels that I follow. So it can be interesting. So your Instagram is technically defining you. No offense, anyone. अगर किसी को लगा हो तो. Anyways, let's get back to our course. Let's study the reflection of sound now. Reflection of sound works exactly like the reflection of light. Reflection of So properties you see in sound. Yeah. So हाँ एक छोटी सी difference होती है उसमें बस. Let's try to understand. So if we have a like straight surface, like let's say a wall, and I produce a directional sound. What do I mean by saying directional sound? Let's say I have three particular types. हाँ एक tunnel या something, a pipe or something. I took a pipe and another pipe. Okay. Now what happens is when I produce some sound here, let's say आरज ने यहाँ पे चिल्लाया आ. Okay. So यहाँ आपको मतलब कोई कुछ भी चिल्ला सकता है. So what you would notice is that even though यहाँ हमारे पास एक straight tunnel है, ठीक है, so we expect कि sound किस direction में जा रही होगी, सारी की सारी sound सारी की सारी एक ही direction में जा रही होगी, and it gets reflected in this direction, and what you listen कि सिर्फ और सिर्फ इस tunnel के बाहर आपको आवाज सुनाई देगी. That मतलब maximum आवाज आपको यहाँ पे सुनाई देगी. So sounds also follows these laws. The laws are simple that अगर हमारे पास एक हाँ same like reflection of light. So if we have a sound wave, a sound directional sound coming, then the angle of incidence of the sound wave will be equal to the angle of reflection of the sound wave. And this is 90 degree. This is known as a normal. This I is known as angle of incidence. किस incident किस angle पे हुई? Angle of incidence. And angle of reflection. Okay, so this is how sound works. Now, तुम्हें ये चीज शायद familiar ना लगे, तुमने ये कभी नहीं देखी होगी, but let me show you something that all of you probably would have seen. So, have you ever seen a diagram like this? So, पहले बना दो पूरा फिर बताना. And then basically हाँ, so basically home theater के जितने भी आपने Dolby Atmos के आर्ट्स देखे होंगे, वो तुम्हें दिखाते हैं कैसे कि वो एक जगह पे साउंड प्रोड्यूस करके gives you a surround sound. That is basically based on reflection of sound. So they place the speakers in such a way, and the speaker is smart enough to recognize where it is and उससे कितनी दूर walls है to give you an immersive experience कि आपके हर साइड से sound आ रही है. So yeah, theaters में भी यही होता है. But a theater one I do not use the example because theaters में multiple speakers होते हैं. So if you are listening a sound coming from right and left, there are different speakers producing it. It's not really reflection producing it. हाँ, वो तो इनफैक्ट रिफ्लेक्शन को रोकने के लिए तुमने देखा है when you have been to older auditoriums, अब नए में तो different materials use होते हैं. Black तुम देखते हो, black material use होता है auditoriums में सारे. तुम महाराष्ट्र गए होगे, जितने महाराष्ट्र के बच्चे हैं वो ऑडिटोरियम, तो वहाँ पे ब्लैक, हाँ तो ब्लैक फ्लैप्स लगे होते हैं. अंदर काफी जगह तुमने पुराने कोई हॉल गया तो वहाँ पे ना होल्स देखे होंगे तुमने बहुत सारे छोटे छोटे. सो दीवारों में छोटे छोटे होल्स होते हैं वुड में, एंड दिस इज बेसिकली टू स्टॉप द बेसिकली रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड. तो अंडरस्टैंड इट, रिवर्बरेशन तो हम समझेंगे अभी, बट रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड होने के लिए, ठीक है, कि मतलब साउंड रिफ्लेक्ट ना हो एक बार, वरना क्या होगा कि वो सेम साउंड आपको बार बार सुनाई देती रहेगी. तो क्या पढ़ेंगे, ठीक है. So this is what reflection of sound is. Let me write the laws of reflection. So if you say the laws of reflection, the angle of incidence is always equals to angle of reflection. This is the first law. And second law says that the incident wave, reflected wave, and normal lie in the same plane. All lie in the same plane. इसका मतलब समझते हैं.
सो जब हम थ्री डायमेंशन में आते हैं तब एक प्लेन इज लाइक अ शीट ऑफ पेपर. सो दे आर सेइंग कि अगर हमारा एंगल ऑफ लेट्स से लेट्स टेक दीज थ्री एग्जांपल्स. तो लेट्स से हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस ये एंगल बनाता है. सो जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा या फिर जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो भी इसी प्लेन पे लाई करेगी. मीनिंग इट विल ऑलवेज लाई ऑन दिस पर्टिकुलर, अगर मैं एक सरफेस बताऊं इसे, तो इस पर्टिकुलर सरफेस पे. ठीक है, तो इसके जो भी सरफेस बनेगा, मतलब इस कैन नॉट बी लाइक दिस, इट कैन नॉट बी लाइक दिस, इट विल ऑलवेज बी अ फ्लैट सरफेस लाइक दिस. सो इन डायग्रामेटिकली अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ, so I can make a diagram, I hope. So something like this. Let me make three axes first of all, so that you can see all three axes. So these are the three axes X, Y, Z. Now let's start imagining 3D. So let's say I make a plane on this. क्या? अरे प्लेन ही तो बना रहा हूँ. 3D plane. हाँ तो टेढ़ा ही बना है, इंटेंशनली टेढ़ा बना है. Let's say we have a plane on this. So अगर इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस है, इस प्लेन पे लाई करता है. ठीक है. So let's say this is the angle, this is the incident wave, and then normal भी इस पे लाई करता है. Then reflected ray भी इसी प्लेन पे लाई करेगा. It cannot be like कि reflected ray इस प्लेन से बाहर है, even though इसके साथ ये दोनों एंगल सेम. नहीं, it will always be on the same plane. ठीक है. It cannot be apart from this plane, मतलब ये नीचे नहीं जा सकता, ऊपर नहीं जा सकता, ये इसी प्लेन पे रहेगा. That is how it works. Okay. Very important. आपने बताया था कि लाइक मूवी थिएटर्स में जो वो ऐसे रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वाला लॉ. You can always change the angle of incidence. अच्छा, इंसिडेंस change कर दो. You don't have, you can change its plane. हमने बोला है तीनों एक प्लेन पे रहेंगे, लेकिन हमने ये थोड़ी कहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एक ही प्लेन पे रह सकता है. वो तो किसी प्लेन पे जा सकता है, वो तो किसी और प्लेन पे. लेट्स में हाँ कोई और प्लेन बनाता है, मान लो मैं ऐसी प्लेन बनाता हूँ. ठीक है. सो समवट लाइक दिस. सो दिस इज अ डिफरेंट प्लेन ऑन दिस सेम एक्सिस. तो वो तो इस प्लेन पे भी लाई कर सकता है, सब तीनों उस पे लाई करेंगे. Also, you should be able to understand 3D graphs, because if you think about it, you will be seeing a lot of 3D graphs eventually over the time of your courses. So not in 9th 10th exactly, but eventually धीरे धीरे जैसे जैसे बड़े हो गए ना, आपको बहुत सारे 3D graphs को बनाना, डील करना आना चाहिए. तो सीखा करो. सर 3D को सर 2D बनाना. हाँ मतलब भाई, तो भाई कॉम्प्लेक्स लगता है बट इतना होता नहीं. एक और भी तो लॉ होना चाहिए जो इसमें लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में, साउंड के लॉ में, साउंड के लॉ में तो और कोई लॉ नहीं. दिस जस्ट वन थिंग दैट यू शुड नो, दैट इन इसके जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है, दे डू नॉट, जब लाइट के पढ़ेंगे ना हम, तो वी नीड अ स्मूथ एंड शाइनी सरफेस. स्मूथ एंड शाइनी सरफेस. लाइट में अच्छी रिफ्लेक्शन होती है. नहीं, लाइट में आपकी रिफ्लेक्शन तभी होगी प्रॉपरली जब स्मूथ एंड शाइनी सरफेस हो, वरना उसे हम बोलते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन. बट साउंड में ऐसा नहीं होता है. सरफेस प्लेन और रखो, साउंड विल बी रिफ्लेक्टेड बैक इन द सेम लाइट. लाइट में होता है ना फिर. लाइट दैट इज नॉट रियली अ लॉ, दैट इज मोर लाइक ए कंडीशन. वो लॉ में ऐड नहीं होगा, वो रिफ्रैक्शन में होता है. होता क्या है? वो अलग है, उसमें लॉ बोलते हैं, साइन आई अपॉन साइन आर होता है, अलग होता है. दूर है मुझसे बहुत. एनीवेज, क्या 10th में सीखोगे प्रोबेबली किसी और से. नहीं. सर से पहले से कहना. ठीक है. Let's study echo. तुम्हें से कोई बेंटन देखता था? यस. तुम्हें echo याद है? यस सर. आज तुम समझोगे करता क्या था. Let's study. अच्छा ना है ना. छोटा सा वाइट हो गया. नहीं, मैं तो अल्टीमेट वाले की बात कर रहा था. नहीं बात ओरिजिनल वाली. नहीं, ओरिजिनल बेकार थी. नाम है ना. समय भी याद नहीं है वो कैसे देखते हैं. याद नहीं है तुझे? बहुत पहले लिख लेते.